डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून बाय डी.एच. लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट रिचर्ड लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट रिचर्ड लॉरेंस, बॉर्न इन 11 सितंबर को पैदा हुआ है इन 1885। He was an English poet, playwright, novelist, essayist, short story writer, and literary critic. Lawrence's opinions earned him many enemies, and he endured official persecution, censorship. This is a piece of his writings. In this poem, last lesson of the afternoon, he expresses a mood of bitter desperation at the thanklessness of a teacher's work. The speaker of the poem, who happens to be a teacher, compares his students with hounds who hate to chase knowledge. The teacher has failed to inspire them. He thinks that his teachings and the pupils' learning are both purposeless, as he can no longer howl them and urge them anymore. In this poem, reflects the mental state of a teacher who finds his students unwilling to learn in spite of all his efforts. Through this poem, poet tries his best to motivate his students, to give them knowledge, to mold them, but students are unwilling. They are not ready to learn in spite of all poet's efforts. देखो बेटा, मैं पहले फर्स्ट स्टेंजा पढ़ूंगी, उसके बाद आपको समझाती हूँ. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart? देखो बेटा, पेन भी रखना हाथ में, नोटबुक भी, या अंडरलाइन करना ये कुछ वर्ड्स, फिर आप खुद देखोगे इनकी मीनिंग्स, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं फिर लेना पड़ता है, क्योंकि फिर अपलोड भी करना मुश्किल होता है. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart? My pack of unruly hounds, I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can howl them and urge them no more. In this poem, a teacher is sitting in front of his students in the class. टीचर बहुत ही थकान महसूस कर रहा है और वो एंक्शियसली वेट कर रहा है बेल का, इसीलिए स्टार्ट भी किया है व्हेन विल द बेल रिंग. The teacher compares himself to a hunter and his students to the hounds. अपने को हंटर किया है, one who hunts, हंटर के साथ किया है कंपेयर, और स्टूडेंट्स को किया है होंड्स के साथ. होंड्स जो होते हैं
वो शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते जिनको शिकार किया जाता है। Poet says the hounds have been tugged the leash for a long time and trying to break free. जिस तरह शिकारी कुत्तों को गले में वो बेल्ट जैसा डाला गया होता है उनको खींचने के लिए, तो मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ इनको अपनी तरफ खींचने के लिए, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू गिविंग देम नॉलेज, बट दे आर जस्ट लाइक hounds who ought to be hunt। ये जो पॉइंट है ये बहुत आई मीन टू से इस वक्त हम बोलेंगे ये जो टीचर है तंग आ चुका है, इनको मोटिवेट करते करते, इनको अपनी तरफ रागिब करते करते अल्टीमेटली ये टीचर इनको शिकारी कुत्तों के साथ कंपेयर करता है। ये कहता है कि माई पैक ऑफ अनरूली hounds, ये एक शिकारी कुत्ते हैं। He finds it impossible to set them on a quarry, वो उनको अपने काबू में नहीं ला सकता है। Because they hate to hunt। हंट किससे कंपेयर किया जाता है? एक शिकारी को, शिकारी कुत्तों को इसलिए अपनी तरफ रागिब करना होता है क्योंकि उन कुत्तों को हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को अपनी तरफ रागिब करता है इन ऑर्डर टू गिव देम नॉलेज, बट स्टूडेंट्स आर वेरी, दे आर नॉट willing to teach, they are not willing to learn। That is why they hate to hunt। The word quarry has here a double meaning। It means an animal that is being hunted। It also means a place from where large amount of marbles etc. can be dug out। In this stanza टीचर क्या कहता है कि ये मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, they are unruly, they have no rule। My students have no rule, they are unwilling to learn, they are not ready। जिस तरह शिकारी कुत्तों को अपना जो उनके साथ होता है उनको खींचने के लिए अपना ये हंटर, तो वो मोल्ड होते हैं। ये अपने स्टूडेंट्स को अनरूली कुत्तों के साथ कंपेयर करते हुए कहता है कि दे आर अनविलिंग टू लर्न। मैंने बहुत कोशिश की उनको अपनी तरफ खींचने की, बट ऑल इन वैन। द टीचर मीन्स to say that his students hate to hunt in the quarry of knowledge, in the same way as some unruly hounds might refuse to hunt an animal। जिस तरह शिकारी कुत्ते कोई एनिमल पकड़ने में रिफ्यूज़ करता है, इनकार करता है, उसको नहीं विलिंगनेस नहीं होती है उसको शिकार करने में, इसी तरह इन स्टूडेंट्स को बहुत रागिब करने के बाद, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल टॉयल्स, दे आर just like unruly hounds, they are not ready to take knowledge। The teacher says that he can no longer force or coax them। वो कहता है कि वो इन्हें ज़्यादा मजबूर करने और फिसलाने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब तैयार नहीं है, इसलिए कहता है आई कैन हाउल देम एंड अर्ज देम नो मोर। मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता हूँ।
Because he again says, I cannot start them again on a query of knowledge they hate to hunt. मैं नहीं उनको नॉलेज की तरफ खींच सकता हूँ, मैं नहीं इनको नॉलेज की तरफ रागिब कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर अनविलिंग, दे आर नॉट रेडी टू टेक, दे आर नॉट रेडी टू लर्न. इनको फजूल है पढ़ाना. शायर के कहने का मतलब है he thinks that his teaching and people's learning are both purposeless, as he can no longer howl them and urge them anymore. Stanza second. दूसरे स्टेंजा में कहता है शायर, No longer now can I endure the burnt. No longer now can I endure the burnt of the books that lie out, of the books that lie out on the desks, a full 60 of several work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? What good to them or me I cannot see, so I shall take. The teacher sees books opened out on the desks in front of them. स्टूडेंट्स को खोल के बुक ओपन है अपने डेस्क पे. फुल 60 यानी 60 बुक्स, 60 कापियाँ. He knows that the students have no interest in them. They are unwilling. उसको पता है स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता है, वो नहीं है इसके साथ. No longer now can I endure the brunt of the books that lie out of the desk, a full 60 of several work that they have offered me. I am sick. Poet says, so the sight of these books gives me an irritation. Poet says कि मैं इनका ये बुक सामने रखना, फिर मुझे एक होमवर्क दिखाना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर, मुझे इरिटेशन होती है. He says that he can no longer bear this burnt. Endure means bear, बर्दाश्त. मैं इस चीज़ को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. He also sees before him 60 homework notebooks. 60 means 100 में 20 है, 30 means 60. He has been given them to check the correct. The students have done their homework in a very dirty and untidy manner. Poet says, no longer can I endure the burnt of the books that lie out on the desks, a full 60. 60 कॉपियाँ मुझे चेक करनी हैं और वो भी कितनी डर्टी है, मैं इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. I am now sick, the teacher says. I am sick. मैं तंग आया हूँ, उकता गया हूँ बहुत इन स्टूडेंट से, इनकी कॉपियों से. He finds no good in what he is doing. अब इसको ये भी पता नहीं है कि मैं क्या करूं. It has no good for him or for the students. न स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और न मेरे ही लिए अच्छा है. The teacher fails to understand what good there could be in their futile teaching and learning. वो इस सब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फ्यूटाइल कहता है. जब स्टूडेंट्स नहीं है रेडी, टीचर का भी मन नहीं करता है फिर पढ़ाने का, तो इट बिकम्स a futile exercise. I think half of the poem is sufficient for today. In today's lecture, I taught you 2 stanzas
of the poem Lost Lesson of an Afternoon, Lost Lesson of the Afternoon by D.H. Lawrence. In this poem मैंने क्या पढ़ाया आपको? Learner is not willing. It means जब स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट थीम है कि जब स्टूडेंट्स तैयार नहीं है पढ़ने के लिए तो टीचर का भी मन नहीं करता है फिर पढ़ाने को। ये जो टीचिंग प्रोसेस है ये टीचिंग एंड लर्निंग है। टीचिंग ही जितनी नहीं चलेगी, लर्निंग ही जितनी नहीं चलेगी। ये जो प्रोसेस है टू वे प्रोसेस है। टीचर पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट सीखने चाहिए, मगर अफसोस के साथ when the students are not ready, teacher becomes also weary in the classroom. That is all for today. Thank you very much. Fi amanillah.